Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty has recovered by 195 points, and again Nifty closed above 18,200 level. The close was at 18,264. So over the last couple of days, we are observing that 18,200 was a resistance zone, and we believe that whenever the index will close above 18,200, it will open up for more upside. So now today, yesterday there was a first day we have observed the close. We need a confirmation for one or 2 day more. So this 18,200 sustaining, it will open up for 18,800, which was the close to the all-time high, and even we believe it can approach towards the 19,000 level. So bias for the Nifty is very strongly positive. On the lower side for the last couple of days, 18,050 was the level from where the market has taken support. So at the lower side, 18,000 will act as a support, and higher side, immediate resistance is 18,600. But gradually, we believe that this level should be taken out, and we should be heading higher. So bias is positive for the market. Coming to the Bank Nifty has closed at 43,284. The Bank Nifty was up by 600 points, but the day before the Bank Nifty was down by 1,000 points. So we only recovered 600 points more, 400 points recovery is due on Bank Nifty. So looking at the chart pattern, I believe anything above 43,000 is a positive sign. So before 2 days back at 43,000, there was a lot of call writing. So that was acting as a resistance. So in yesterday's session, the Bank Nifty has cleared that. So I believe now this 43,000 to 44,000, this will be the trading range for the next one or two trade session. Yesterday, we also initiated a call option in the Bank Nifty. So overall, the structure is positive. So I think we should be heading higher. Today, both the indices closing above 18,200 and Bank Nifty closing above 43,000 will give us more confidence that the markets are heading higher. So now coming to the derivatives report. So in derivatives yesterday there was a long built up in Nifty futures, which was an addition of 0.65 million shares. The put call ratio has also seen an uptick at 1.1 ratio as compared to 0.85 previously. The major additions were seen in 18,200 and 18,300 put options, and under the call options 18,400 and 18,500. So this would act as a support and resistance from the derivatives point of view. In Bank Nifty, also there was a long build up to the tune of 3.26%, which was an addition of 0.12 million shares. The put call ratio, which was at 0.59, has now recovered till 0.90 level. So major additions were seen at the 43,000 and 43,300 strike price in the put option. So that will be the support. On the call option front, 43,300 and 44,000. So that will act as a resistance. So with this, there were many stocks in yesterday's session where we saw there was a volume breakout. Tata Motor was one counter where we saw a good amount of breakout coming. So we believe this momentum will be seen in next one or two trading session, and we should be keeping a watch on it. Followed by this, the stock like RITES it's looking positive on charts, so that can be kept on watch list. Philip Carbon is one call which is very positive, which can be viewed for next weekend. So the counter is look quite positive. So net the directional the view remains positive. We need a confirmation, which I believe it will be coming today. So it's a bio decline of a market today. The HGX is little bit down 10-15 points negative, but then I think during the day that will be recovered, and we expect a positive close for the day. So that's all from mine. I will hand over to Devang sir for more research updates. Thank you. Thank you, Bridges, sir. Good morning, all. So, a few fundamental updates from my end. Firstly, on M&M and Tata Motors, the Energy Transition Advisory Committee of Petroleum Ministry has suggested in its final report that India should ban diesel-powered four-wheelers in all cities with a million plus population by 2027. And by 2035, the share of grid power in India's energy use must rise to 40% from current 18%. The report also suggested that from 2024, all new registrations for the city delivery vehicles should be only electric, so that in the next 10 years, 75% of the city delivery vehicles can be electric in all million plus cities. We believe this is negative for diesel car makers like M&M and Tata Motors.
In terms of Birlasoft, so Birlasoft reported numbers. Birlasoft reported a good set of numbers. If you exclude the InvaCare numbers, the growth was 3% CC terms, which is better than peers, at least large cap peers. It is taking the right step to turn around the business, like focus on delivery clients, investment in sales, hiring, and leaders to drive vertical growth. We expect the company to register QoQ growth in coming quarters, led by BFSI bottoming out of ERP business and healthy H2 FY24E. However, we have conservatively assumed 6.5% YOY growth in revenues due to macro uncertainty and project runoffs and InvaCare base. We have kept our estimates unchanged. Their margins is expected to improve, and we have revised our multiple upwards to 15x, as we are seeing some green shoots in turnaround. Hence, we are maintaining a buy rating on the stock with a target price of 340. In terms of Godrej Consumer Products, the company has completed acquisition of Raymond Consumer Care by way of slump sale. In Greenply industry, the company announced a joint venture with Netherlands-based Summit BV on a one-on-one shareholding basis, 1:1, to manufacture and sell functional furniture hardware through a manufacturing facility in India. In terms of JSW Steel, the board of directors will convene a meeting on May 19th to consider dividend and raising long-term funds via QIP, issuance of non-convertible senior unsecured fixed deposits. So they are raising, funds for long-term growth. This bodes well for JSW. In terms of Ease My Trip, the company board has approved an identification and acquisition of certain entities in the domestic and overseas jurisdiction to drive inorganic growth. It has also approved incorporation of wholly owned subsidiary for venturing into general insurance business. So that's it from my end. Over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Starting with some news and results for today. Starting with the economic news. Economic Affairs Secretary Mr. Ajay Seth said on Monday that the global financial situation over the world is daunting, but at the same time, the Indian economy and especially the Indian financial sector is well protected. However, he warned that India has to be cautious and be on the lookout for early warning indicators that provide signs of financial sector stress. Coming to some news regarding coal, India's coal imports increased by 30% to 162.46 million tons in 2022-23 financial year against 124.99 MT in the year ago period. The import of cooking coal rose by 5.44% to 54.46 million tons over 51.65 million tons in FY22. In March alone, the non-cooking coal imports stood at 13.88 million tons against 12.61 million tons in the same month last year. Cooking coal imports were 3.96 million ton against 4.76 million ton imported in March 22. India is among the top 5 coal producing countries in the world. However, some parts of its coal requirement are met through imports, as the country is also among the major consumers of the dry fuel. The next news is related to NLC India, where the state-owned company on Monday said that its board has approved raising up to rupees 5,000 crores through issuance of debentures in the ongoing financial year. The company's board has also approved a proposal for incorporation of a wholly owned subsidiary company to take over the existing renewable assets. Under the Ministry of Coal, NLC India operates 3 open cast lignite mines having a total of capacity 30 million tons per annum at Neyveli in Tamil Nadu, 1 open cast lignite mine at Barsingar in Rajasthan with an installed capacity of 2.10 million ton per annum, and an open cast coal mine at Talabira in Odisha with an installed capacity of 20 million ton per annum. Coming to some news related to KP Energy, where the company on Monday announced commissioning of a 29.4 megawatt wind energy project in Gujarat. The company said in a regulatory filing that
The capacity is a part of 250.8 million megawatt ISTS connected wind power project awarded by Solar Energy Corporation of India Limited under Tranche 8 bidding. Coming to some results that were out yesterday. The first is regarding Pidilite Industries, where the company on Monday reported a 12% increase in consolidated net profit at rupees 285.86 crore for the fourth quarter that ended March 2023, led by moderation in input costs and growth in domestic demand. The next results were of MGL. As per the results declared yesterday, Mahanagar Gas recorded a net profit of rupees 268.8 crores in the fourth quarter of fiscal year 22-23. The revenue from operations in Q4 FY23 came in at rupees 1771.8 crore, which is 67% higher against rupees 1187.6 crores that was clocked in the year ago period. The next results are of UPL, where the company reported a consolidated net profit of rupees 792 crore for March quarter of FY23, which is a drop of 43% from rupees 1379 crore in the same quarter last year. Revenue from operations came in at rupees 16,569 crores, growing 4% from rupees 15,860 crore in the year ago period. The company's EBITDA fell 16% year-on-year to rupees 3,033 crores, and EBITDA margin slipped 338 basis points year-on-year to 18.3% during the quarter. Coming to the results of VIP Industries, where the luggage maker on Monday reported a consolidated net loss of 4.26 crore for the fourth quarter ending March 23. The company had posted a net profit of rupees 12.39 crore in the Jan to March quarter last year. However, its revenue from operations increased 26.6% to rupees 450.57 crore during the quarter, under review against rupees 355.90 crore during the last year period. The final results are of Canara Bank, where helped by higher core income and lower provisions, the bank on Monday reported a 74% jump in March quarter consolidated net profit to rupees 3,336.51 crores. The Bangalore-based lender had reported a net profit of rupees 1,918.80 crore in the year ago period. For FY23, its post-tax profit grew to rupees 11,254.75 crore from rupees 6,124.83 crore in FY22. So this was all from my side. Now handing it over to Hitendra. Yeah, thank you and good morning everyone. हम इस कॉल को एग्जैक्टली डिवाइड करते स्टार्ट करते पहले एक एनर्जी ट्रांसमिशन एडवाइजरी कमेटी है जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया को बैन कर देना चाहिए डीजल पावर्ड फोर व्हीलर सारी जो कि सिटीज में जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन प्लस है 2027 है। इससे ये होगा कि 2035 तक जो कि ग्रिड पावर का शेयर है वो कि अभी करेंटली 18% और 40% तक हो जाएगा, और जो भी नए रजिस्ट्रेशन है 2024 से बढ़ाना चाहिए कि अगले 10 साल में जो कि इलेक्ट्रिक की डिलीवरी है 75% तक हो जानी चाहिए यहाँ की मिलियन प्लस पॉपुलेशन से। सो ओवरऑल की देखा जाए तो डीजल पावर में दो ही कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चर करती है डीजल का, जो कि महिंद्रा एंड टाटा, जो कि सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है स्टॉक्स के। दूसरी ये बिरला सॉफ्ट के लिए, बिरला सॉफ्ट में अर्निंग है अगर देखा जाए 60 तक 3% का जो देखा जाए डॉलर में इनका जो वाक्य है उसको अगर एक्सक्लूड करते हैं तो, और ये देखिए मैनेजमेंट भी देख रहे हैं राइट स्टेप ले रहा है बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए, और डिलीवरी जो क्लाइंट से ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स और सेल्स एंड हायरिंग लीडर्स को ड्राइव करें वर्टिकल ग्रोथ के लिए। हमें लगता है कि कंपनी आगे रजिस्टर कर सकता है क्योंकि जरूरत है अगले क्वार्टर में बीएफएसआई जो कि बॉटम हो रहा है बीएफएसआई में और बॉटमिंग हो रहा है इनका जो ईआरपी बिजनेस और हेल्दी H2 H5 24 है। हाउएवर हमें लगता है कि हमने कंसिडरेबली अज्यूम किया 6.5% का वाई ग्रोथ जो कि रेवेन्यू है जो कि मार्केट थोड़ा अनसर्टेनिटी रह सकता है प्रोजेक्ट रन ऑफ के कहते हैं इनवागेट के बेस पे, और कंपनी ने एस्पायर किया कि 15-16% एबिटा मार्जिन पे अचीव कर सकता है आगे कमिंग क्वार्टर्स पे। तो हमने 14.5 के एबिटा मार्जिन से हमने हमारे जो एस्टिमेट्स है उसको अनचेंज रखा है, बट हमने जो मल्टीपल्स है उसको रिवाइज कर दिया जो कि पहले 14 से 15 तक के 340 के प्राइस टारगेट के साथ। मोडेज कंज्यूमर ने कहा कि उन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया है रेमंड का जो भी कंज्यूमर केयर बिजनेस है इस लंप सेंटर का।
ग्रीनमा इंडस्ट्रीज ने कहा कि वो एक जेवी करेंगे नीदरलैंड बेस्ड समिट बीवी के साथ 1:1 शेयर होल्डिंग बेसिस पर मैन्युफैक्चर सेल करेंगे फर्नीचर हार्डवेयर जो कि कोरिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंडिया में बनेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मई 19 को मिलेंगे और उन्होंने कंसिडर कर सकते हैं कंपनी की शेयर्स के लिए डिविडेंड के लिए और रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए जो कि वाया क्यूआईपी भी हो सकता है या प्रोमिसरी सिक्योरिटीज या एनसीडीज के जरिए फिक्स रेट बॉन्ड्स के जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स या रिडेनेबल एनसीडी जो कि इंडियन मार्केट से मिल सकता है अदर पॉसिबिलिटीज है। IDBI के प्लानर्स की कंपनी ने भी बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया और एक्वायर किया है सर्टेन एंटिटीज जो कि कंपनी के डोमेस्टिक ओवरसीज जुरिडिक्शन में जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से हो सकती है और उन्हें इसका अप्रूवल भी मिल गया है जो कि इनकी खुली और सबसे बड़ी वेंचरिंग जो कि इंश्योरेंस बिजनेस है। रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं देखते हैं जैसे प्रीलाइट के भी नतीजे देखे जाए 12% हमें बेस देखा गया जो कि नेट प्रॉफिट पे 285 करोड़ का था फोर्थ क्वार्टर में बेसिकली जो इनपुट कॉस्ट का थोड़ा सा रिलीफ मिलते हुए हमें सारी बेसिकली जो कि रॉ मटेरियल बेस्ड कंपनीज में ये प्रेशर कम होते हुए आते हुए दिख रहा है। एमजीएल के भी नतीजे देखे नेट प्रॉफिट देखा जाए 270 करोड़ के आसपास तक इस फिस्कल में रेवेन्यू देखा जाएगा ऑपरेशन से 1771 करोड़ का जो 67% हाया था पहले का 1187 करोड़ का है ये साल पिछले साल में। यूपीएल के भी नतीजे देखेंगे अगर नतीजे में देखा नेट प्रॉफिट देखा है 792 करोड़ का है जो कि 43% का ड्रॉप देखा गया जो कि 1369 करोड़ का सेम क्वार्टर में था। रेवेन्यूज में देखा जाए 16,500 करोड़ का रेवेन्यू देखा गया जो कि 4% आया था जो कि 15,860 करोड़ का था। कंपनी का एबिटा भी 16% से फॉल हुई वाई में जो कि 3,033 करोड़ और मार्जिन 338 बिप से नीचे सरकी है 338 बिप से नीचे आई है जो कि थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव रह सकती है जो कि 18.3% है। वीआईपी इंडस्ट्रीज ने भी कहा कि उनके जो नेट लॉस है वो की नेट लॉस पोस्ट किया गया जो कि 4.25 करोड़ का है और कंपनी ने 112 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया सेम मार्च क्वार्टर में पर रेवेन्यू में हमें बढ़त आते हुए देखी जो कि 27% जो कि 450 करोड़ का है और क्वार्टर एंड रिव्यू में देखा जाए तो 3555 करोड़ का है। केनरा बैंक ने भी कहा कि इनकी हायर इनकम और लोअर प्रोविजंस के चलते बैंक ने 74% का मार्च क्वार्टर में जम देखा नेट प्रॉफिट जो कि 3,336 करोड़ का है और अगर हम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट देखा जाए तो या 11,254 करोड़ था जो कि 6128 करोड़ था। बाकी की न्यूज देखते हैं जैसे आईजीएल के भी हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि 370 जो कि 3,710 करोड़ है और एबिटा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 497 से जो कि 428 करोड़ का है। हाँ कंसर्न एनोरो के भी नतीजे दिखे जो कि 93 करोड़ के सामने 25 करोड़ का रेवेन्यू देखा जाए तो 12.8% आया था जो कि 1733 करोड़ जो कि 1536 करोड़ का है। एचएफसीएल के भी नतीजे देखे नेट प्रॉफिट 10% आया था जो कि 72 करोड़ का है जो कि 65 करोड़ का है। रेवेन्यू 21% आया था जो कि 1433 करोड़ का वर्सेस 1183 करोड़ का है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल के भी नतीजे देखे जो नेट प्रॉफिट देखे 137 करोड़ का जो कि वर्सेस 57 करोड़ का। रेवेन्यू 38% आया था जो कि 1200 करोड़ का जो कि 869 करोड़ का है। पीएनबी हाउसिंग बैंक ने कहा कि वो इंक्रीज करेंगे 500 करोड़ के कैपिटल वाया राइट्स इशू से। सेंचुरी टेक्सटाइल्स के लिए रियल्टी फर्म ने कहा कि वो ये एक्वायर करेगी 28.6 करोड़ लैंड पार्सल जो कि सरजापुर रोड पे है बेंगलुरु में। आरती इंडस्ट्रीज का भी हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट 149 करोड़ का है जो कि 141 करोड़ का। रेवेन्यू देखा जाए 1657 करोड़ का वर्सेस से 1747 करोड़ का है। और अभी हम आते हैं मार्केट में हमें लग रहा है निफ्टी में जो कल और परसों में हम देखेंगे कि बहुत बड़ा न्यूज देखा गया कि 18,000 को ऑलमोस्ट रिटेस्ट करके वापस 18,200 पे आना। सो हमें यहाँ से लग रहा है कि एक बार अगर 18,200 अगर वीकली क्लोज पे आ जाता है या 2-3 दिन सस्टेन करता है तो एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हमें आते हुए दिख सकती है। बेसिकली अभी अगर लेवल सस्टेन कर लेते तो हमें यहाँ से 17,800 और 18,000 का एक बेस बनते हुए दिख रहा है जो कि नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटता है तो फिर हम 17,500 की तरफ देखेंगे नहीं तो हम आगे 18,500 18,700 के लेवल दिख सकते हैं। रिजर्व बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमें रिकवरी आते हुए देखी जो कि 43,000 के ऊपर फिर से बैंक निफ्टी ने अपना पैर जमाने की कोशिश की है और हमें लगता है कि यहाँ से अगर एक बार रहा तो वापस 43,600 का लेवल निकाल सकता है। बैंक निफ्टी में जो उसका 10 डेज का मूविंग एवरेज उसको टेस्ट कर चुका था ऑलमोस्ट 20 डेज के पास भी था तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं जो ब्रेकआउट था उसका ऑलमोस्ट उसका करेक्शन के आसपास थे वहीं से उसने रैली दिया। तो बैंक निफ्टी को हमें लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर दिख सकता है। बैंकिंग स्टॉक पे थोड़े जंप्स आते हुए दिख सकते हैं लेड बाय पीएसयू बैंक से भी हम थोड़े नतीजे बेटर आते हुए दिख रहे हैं। तो कल हमने देखा सेकेंड हाफ में पीएसयू बैंक से ही मदद की भी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में भी। So that's it from my end. Thank you everyone for taking the morning call.